Good evening, children. Now, topic for today's class is globalization and the Indian economy. Today, this topic we are going to study. Now, as you all know, that this globalization have played a very crucial role in the upgradation of the nation. Also, it has provided several sources of development. The regions of the world are getting interconnected through culture, social, political, and economic factors. MNCs have been acting as a major force in the globalization process. Globalization has been facilitated by several factors such as liberalization of trade, investment policies, and pressure from international organizations such as World Trade Organization or WTO. Now, let's move to the first topic of this. My first topic is production across countries. This is the topic, production across countries. Now let's talk about this. See, until the middle of the 19th century, only raw material, foodstuff, and finished goods across the boundaries of a country. Trade was the main channel. Connecting distant countries. Production was confined within the boundaries of a country. However, with the emergence of MNCs, emergence means with the beginning. However, with the emergence of multinational companies, or in short we call it as MNCs, multinational companies or MNCs, the pattern of production changed. MNCs set up their officers in regions where they could get cheap labor and other resources. This was done to reduce the cost of production and to earn more profit. The main target was to earn more profit. Now, the MNC produce goods and services globally. The MNCs stands for your multinational companies. They produce goods and services globally. Globally means on an international level. Therefore, production is organized in increasingly complex ways. The production process is divided into small parts. जो इस production process है ये small parts में divide कर दिया जाता है and is spread across the globe. पूरे विश्व में ये फैला हुआ है. Investment made by the MNCs. MNCs stands for your multinational companies. The investment made by the MNCs to buy assets. What they do? They buy the assets such as land. Assets में क्या क्या चीजें आती है? Means properties such as land, machinery, etc. is called foreign investment. उसको हम किस नाम से जानते हैं? That is known by the name of foreign investment. और कई बार क्या होता है? The MNCs set up their production jointly with some local companies. Sometimes the MNCs set up their production jointly with some local companies. This is beneficial for local companies. और जो local companies होती हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है. As they get money for additional investment. And also the latest technology for production.
but most MNCs buy, but maximum MNCs buy. अब द लोकल कंपनीज, जो भी MNCs होती है ये सब लोकल कंपनीज को परचेज करती हैं, बाय करती हैं टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन. एग्जाम्पल कार्जिल फूड्स. देखो जो लोकल कंपनीज होती हैं लोग उसको पकड़ते हैं. देखो उससे पकड़ने से फायदा क्या, इनको रेट प्रोडक्ट्स जो है वो कम रेट पे मिल जाएंगे और इजीली अवेलेबल रहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज large MNCs may also place orders for production. Large MNCs may also place orders for production with small producers across the globe. These products are sold by the MNCs. और जो ये products होते हैं इनको कौन बेचता है? These products are sold by the MNCs, by the multinational companies under their own brand names. किसके बैनर पे बिकते हैं लोग? Under their own brand names. The MNCs determine the price. जो MNCs होती हैं यही लोग रेट बताती हैं, प्राइस बताती हैं, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर दीज प्रोड्यूसर्स. एग्जाम्पल क्लॉथिंग ब्रांड, क्लॉथिंग ब्रांड्स लाइक एडिडास. जो एडिडास है इंडिया में लोग उसके MNCs दे लेते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, माय नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेडर्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets. The producers can compete in the markets located in other countries of the world. A large part of foreign trade is controlled by the MNCs. जो ये फॉरेन ट्रेड होता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द MNCs. Now the second point of this is with the opening of trade, the buyers get more choice of goods. The price of two similar goods in the market becomes equal. The producers also compete with each other. Hence, foreign trade results in integration of markets in different countries. The result of greater foreign investment, and finally what happens? The result of greater foreign investment and foreign trade has been greater integration of production and markets across countries, which is termed as globalization. इसको हम लोग क्या कहते हैं? It is termed as globalization. See children, besides the movement of goods and services, the movement of people between the countries has also become common. People move to different countries in search of better jobs, better income or better education. Now the other point is, now let's do the other topic. My third topic is factors which enable globalization. See, the first point is technology, second point is liberalization of foreign trade investment policy, and the third point is flexibility in labor laws. So let's start with technology. Technology has made faster delivery of goods across long distances possible at lower costs. Example, introduction of containers for transportation of goods. Information and communication technology has been remarkably developed. It has been playing a major role in spreading out production of services across countries. The next point is
liberalization of foreign trade and foreign investment policy. So let's start. Taxes imposed on import of goods are termed under trade barriers. Governments can use trade barriers to increase or decrease foreign trade. Remember the point? The government can use trade barriers on trade to increase or decrease foreign trade. देखो आज़ादी के बाद अगर हम लोग आज़ादी की बात करते हैं तो the government of India imposed barriers on trade and foreign investments to protect the domestic producers. However, in the year 1991, the government removed the barrier to a large extent so that the producers could compete globally and could increase the quality of production. This decision was supported by a powerful international organization. The removal of trade barriers and restrictions set by the government. The removal of trade barriers and restrictions set by the government is termed as liberalization. दो वर्ड्स याद रखना हमने पढ़े हैं. एक वर्ड पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा वर्ड है लिबरलाइजेशन. Now let's move to the third point, that is flexibility in labor. Flexibility in labor laws. Now, government has also allowed flexibility in labor laws. Special economic zones, in short we call it as SEZs. Special economic zones are being set up, under which they do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. समझना, शुरुआत के जो 5 साल होते हैं, 5 साल तक इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता शुरुआती दौर में. Now, next move to the next point that you all would be knowing about this, that is WTO, that is World Trade Organization. The next topic is WTO or the World Trade Organization. Now let's talk about this first. ये WTO होता क्या है? World Trade Organization, WTO, is an organization whose aim is to liberalize international trade. इसका जो मेन टारगेट है वो इंटरनेशनल ट्रेड पे है. WTO is an organization whose aim is to liberalize international trade. It establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. और किस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि जो ये रूल्स हैं इनको पूरी तरीके से ओबे किया जाए. It commenced on 1st January 1995. Remember the date? 1st January 1995 under the Marrakesh Agreement. Currently आज के समय में 164 countries are the members of WTO. Total 164 members हैं. That is of. Okay, let me tell you a bit about SEZ. Okay, let me tell you something about SEZ. Just now I have told you that World Trade Organization, whose aim is to liberalize international trade, इसने कुछ अपने रूल्स बनाए थे. रूल्स रिगार्डिंग ट्रेड. इट हैज एस्टैब्लिश्ड सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग ट्रेड and sees that these rules are obeyed. और इसका मेन देखना क्या होता है कि जितने भी इसने नियम बनाए हैं उस पर ध्यान रखा जाए. इसने जो अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी, it commenced on 1st January 1995 under the Marrakesh Agreement.
मार्केश एग्रीमेंट के तहत। Currently 164 nations are there. Total 164 nations are there, those who are performing this work. And all the nations, जो भी इसके members हैं, all the nations will have to follow the terms and conditions. Now, एक word अभी just now you have asked me the word. Siddharth has asked what is S.St. Now, let me tell you. अगर हम लोग लेबर की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट लेबर, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, तो गवर्नमेंट हैज अलाउड लेबर लॉज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो नए क्षेत्र में जहाँ पे काम होता है, द न्यू एरियाज वेयर द वर्क स्टार्ट्स, कई जगह नई एरियाज बनाई जाती हैं, इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज खोली जाती हैं, एमएनसीज वगैरह अपनी फैक्ट्रीज खोलती हैं, इंडस्ट्रीज खोलती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि शुरुआत में जब फैक्ट्री लॉन्च की जाती है, इन द इनिशियल पीरियड व्हेन द फैक्ट्रीज आर लॉन्च्ड, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होते हैं उन एरियाज में विच आर बैकवर्ड या नई नई फैक्ट्रीज काम करती हैं। तो इसमें इंटरनेशनल लॉज के तहत इसमें उन कंपनीज को, विच एवर कंपनी हैव बीन लॉन्च्ड, उनको शुरू के 5 साल तक उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। दे आर फ्री टू नॉट पे द टैक्सेस। देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर ये लोग टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर शुरुआत में ही अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। भाई मार्केट बनाने में आपको समय लगेगा, एंड आफ्टर योर मार्केट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड देन ओनली योर प्रॉफिट वुड बी देयर, और अगर प्रॉफिट होगा तभी टैक्स पे कर पाओगे। सो दैट्स वाई जस्ट फॉर सपोर्टिंग दिस लेबर लॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन मेड। Now I think so these points are clear. Okay, my next topic, मैं जरा अपने अगले टॉपिक पे चलता हूँ। My next topic is impact of globalization. अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। नो चिल्ड्रन, सी, शुरू के इनिशियली फॉर द 5 years दे डोंट हैव टू पे द टैक्सेस। लेटर ऑन जब छठा साल चलेगा देन दे विल बी पेइंग द टैक्स फॉर द 6th year। जो 5 साल बीत गया उनका टैक्स नहीं देना होता है। शुरुआत के 5 साल यू आर टैक्स फ्री, फॉर द इनिशियल 5 years यू आर टैक्स फ्री, एंड व्हेन द 6th year स्टार्ट्स, छठे साल से आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। द फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन among both local and foreign producers is advantageous. It is a very advantageous process for consumers. The consumers enjoy improved quality along with innumerable choices and lower prices for several products. This has also raised their standard of living. अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा होता है, चॉइसेस लोगों के पास ज़्यादा जाती है, और इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का वो भी इम्प्रोवाइज कर जाता है। देखो अब जो मार्केट में कंपटीशन रहता है, व्हेन देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट, सो व्हाट विल हैपन, सो मेनी कंपनीज आर देयर। हर कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट होगा उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करेगी। व्हाई? बिकॉज अगर मार्केट में योर एडवर्टीजमेंट इज नॉट गुड then the customers will buy, consumers will buy some other product. तो इसलिए सभी लोग अपने ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। इससे इसलिए किया जाता है, कंज्यूमर्स इंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है, कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो फॉर शॉपिंग एनीथिंग, यू वुड लाइक टू गो ऑन इट्स क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी है देन ओनली यू विल परचेज। और अगर एक बार इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड वंस, then the next time you are not going to buy that product, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट चूज कर लेंगे। एंड फॉर द कंज्यूमर्स, जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनके लिए ओपन मार्केट है। यू हैव टू पे द मनी, सेवरल प्रोडक्ट्स आर देयर, सेवरल कंपनीज आर देयर,
and whichever suits you, whichever you like, you are going to accept that. Second point is, many new job opportunities have been created in industries. Many new job opportunities have been created in industries. Local companies supplying raw materials to these industries have prospered. कई बार क्या होता है, बाहर की कंपनी होती है और इंडिया उसको रॉ मटेरियल, हमारा देश या आप उसको रॉ मटेरियल देते हैं, इससे दोनों का प्रॉफिट, यू आर ऑल्सो गेटिंग अ सोर्स, आपको भी एक परमानेंट कस्टमर मिल गया और उस कंपनी को भी एक हमेशा के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर मिल गया. And by this only the industries can prosper. Next point is, several top Indian companies have benefited from increased competition. Several top Indian companies have benefited from increased competition. They have invested in new technology and production methods and raised their production standards. Some have collaborated with foreign companies. और कईयों ने क्या किया है? They have collaborated, they have combined with foreign companies. इंडियन कंपनी है, दूसरे देश की कंपनी के साथ मिल जाती है, नया वेंचर आता है, उस पर दे काम करते हैं. Now, next point is, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves by spreading their operation across the world. सबसे अच्छा इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टाटा मोटर्स का. We can take the best example of Tata Motors. Tata Motors is not only in India, it is prevailing throughout the world. Next brand, pharmaceuticals में, दवाइयों में, that is Ranbaxy. Third is Infosys. You all would be knowing the name of Infosys. The next point is Asian Paints. इतने सारे brands, you all would be knowing the name of these brands. The brands are Tata Motors, Ranbaxy, Infosys, Asian Paints, and so many other terms are there. Now, the next point is, globalization has created new opportunities for companies providing services such as IT. The impact of globalization has not been uniform among producers. The impact of globalization has not been uniform among producers and workers. For a large number of small producers, large number of small producers, it has posed major challenges. The small manufacturers are hit hard by the competition. देखो, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनके कम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज हैं, जो छोटे आयात पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. जैसे अभी हम लोग का जो पीरियड चल रहा है, तो इसमें क्या है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. इनके ब्रांड्स हैं, इनके बिक रहे हैं, दे आर हैविंग नो प्रॉब्लम, वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वो बिक रहे हैं. लेकिन जो लोकल कंपनीज हैं हमारी, उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. The small manufacturers are hit hard by the competitions. Example, plastics. अभी तक देखो हमारे लखनऊ में, पूरे इंडिया में जितने भी जो भी कंपनीज या फैक्ट्रीज थी जहाँ पे प्लास्टिक बैग्स बनते थे, उन सब पे बैन लग गया. प्लास्टिक के टॉयज़ पे बैन लगा है, बैटरीज पे लग गया है, टायर पे लग गया, डेयरी प्रोडक्ट्स पे लग गया, एंड सम ऑफ देम. It has also led to closing down of several units, rendering many workers jobless. अभी जो जितनी चीज़ें हो रही हैं एडवांस, अब एडवांस का नुकसान क्या हो रहा है? You all would have seen earlier PCO used to be there. PCO हुआ करते थे. Now the PCOs are no more. जहाँ आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते थे, now all those things have vanished away. अब लोग अपने फ़ोन से खुद ही अपना रिचार्ज कर लेते हैं with the help of softwares or different kind of companies are there. अब इससे क्या हुआ कि जितनी दुकानें थी, जो PCOs थे, वो सब बंद हो गए. और उसको किसने ओवरटेक कर लिया? किसके कारण? ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन और ड्यू टू दिस IT sector. Now let's move to the other point, children.
My other point is special economic zones. Now let's talk about special economic zones have been set up by the central and state government to attract foreign companies. स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाती हैं. इसका मेन टारगेट क्या होता है कि जितनी ज़्यादा फॉरेन कंपनीज आ सके भारत में इन्वेस्ट कर सकें, दे शुड डू दैट. दीज जोन्स हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़. ये जो जोन्स होती हैं इनकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, वाटर की बात करें, रोड्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज एक्सेट्रा. द कंपनीज who set up production units in these zones are exempted from paying taxes for initial 5 years. इसका बेनिफिट समझना. विदेशी कंपनियों को आपने चांस दिया, ओके. अब इसमें पॉइंट समझना, दैट इज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में. अब हम लोग इनको ऑफर्स देते हैं. सी, अ क्वेश्चन इज देयर. द क्वेश्चन इज what are the factors which make companies multinational companies. देखो सी, अब मल्टीनेशनल क्यों बनती है? मल्टीनेशनल का सीधा मतलब क्या होता है? जो कई सारे देशों में स्टैब्लिश करने लगती हैं. मतलब भारत की कंपनी है वो दूसरे देशों में, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स. अब देखो इसका फायदा क्या है. अगर केवल इंडिया की होकर रह जाती है, इफ द कंपनी लिमिट्स इटसेल्फ ओनली विद इन इंडिया, तो उसको यहीं पे उसको प्रॉफिट मिलेगा. बाकी उसकी सेल, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी. और अगर इंटरनेशनल एरिना में आती है तो उसकी सेल बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, बट उसकी सेल भी बढ़ेगी. एंड इट विल बी नोन ऑन अ स्टैंडर्ड. इट विल बी, द कंपनी विल बी नोन बाय द पीपल ऑन अ स्टैंडर्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल. अच्छा देखो, दूसरे देशों को रिझाने के लिए, जस्ट टू अट्रैक्ट द अदर कंट्रीज, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इंडिया में कई सारे ऑफर्स दिए गए. कई सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है. पिछले साल जो हुआ था, इफ़ यू डू पीपल रिमेंबर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो हुआ था, तो इसमें क्या था, कई सारी कंपनीज को वी हैव गिवन देम अट्रैक्टिव ऑफर्स. और सबसे बड़ा ऑफर क्या है कि फॉर द अपकमिंग 5 years दे आर नॉट सपोज टू पे द टैक्सेस. अच्छा, अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा है, किसी भी देश को क्या प्रॉफिट होगा? मान लो कोई अपनी कंपनी इंडिया में खोलता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कंपनी इंडिया में, कोई अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में अपनी कंपनी लॉन्च करती है, तो उसको फ़ायदा क्या है? पहली बात, उसके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो तो बढ़ेगा, लेकिन वो 5 साल में अपना जो उसने लगाया है वो उसको निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा. दूसरा, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडियन कस्टमर्स को, इंडियन पीपल को, भारत के लोगों को, दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट. सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, काम धंधा मिल जाएगा. जितनी ज़्यादा कंपनीज आती हैं उतना ज़्यादा हमें काम मिलता जाएगा. इट विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोजगारी घटेगी देश में. सबसे बड़ा फायदा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. माय नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. So children, fair globalization can create opportunities for all. जो fair globalization होता है वो सभी के लिए opportunities create कर सकता है, and also ensure that the benefits of globalization are shared better. The government can play a major role. सरकार जो होती है बहुत important role play कर सकती है. The government can play a special role, a major role in making this possible. Its policies must protect the interest of both rich and the poor. My first point is the government can ensure that the labor laws, are properly implemented and the workers get their rights. Second point, it can support small producers
to make them strong enough to compete. The government can use trade and investment barriers. The government can use trade and investment barriers for the same. The government can negotiate with WTO. जो सरकार है वो नेगोशिएशन कर सकती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर फेयरर रूल्स. इट कैन अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज. दूसरे डेवलपिंग देशों के साथ मिल सकती है जिनका इंटरप्रेट एक जैसा हो, जिसका इंटरेस्ट एक जैसा हो, टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO. My fourth point is people can also play, जो लोग होते हैं, people can also play an important role in struggle for fair globalization. See, fair globalization से क्या होगा? Fair globalization would create opportunities for all and would ensure that the benefits of globalization, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो भी ग्लोबलाइजेशन का फायदा है that would be shared better. देखो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स सो मेनी टाइप्स होते हैं. जैसे आप दूसरे देश में ट्रेड करने जा रहे हैं. अगर आप दूसरे देश में ट्रेड करने जा रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो देश आपको अलाउ ना करे या वो उसके एरिना में ना आता हो. उनके रेट्स के ऊपर बाइफर्केशन हो सकता है. तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसे ही लोग तरीके लगाते हैं. देखो बैरियर्स क्या होते हैं? कुछ बाउंडेशंस होती हैं कि जैसे मान लो कोई किसी देश के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो हम पे कितना टैक्स इम्पोज करेगा, क्या रेट रहेगा, बॉर्डर क्रॉस करने के रेट्स क्या रहेंगे, मतलब जैसे पाइपलाइन डाली जा रही है एक देश से दूसरे देश में तो चार्जेस क्या होंगे, वेदर इट इज़ एप्लीकेबल और नॉट, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितने सालों के लिए हो रहा है, बीच में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. इट शुड नॉट हैपन कि जो हमारा जो टर्नअप है, जो टाइप हुआ है वो केवल 2 साल के लिए हुआ है या 3 साल के लिए हुआ है, उसमें प्रॉफिट रेशियो पहले डिसाइड कर लिया जाता है. ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड वेल इन एडवांस. और कई तरह के बैरियर्स, कई तरह की रोक लगा दी जाती है. जैसे मान लीजिए आप रेट बढ़ाते जा रहे हैं, बात हुई थी हमारी 5 रुपये पे और उसको आप एक्सीड करते जा रहे हैं, वो देश टैक्स बढ़ाता जा रहा है. अगर देश टैक्स बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक है प्रोडक्ट का रेट ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन केप्ट बाय द WTO. तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीज़ों पे वो ध्यान रखे. जैसे मान लो 2 देशों का करार होता है, पैक्ट साइन होता है कि हम 5 साल तक आपको ये सप्लाई देंगे. अचानक 2 साल बाद या 1 साल बाद वो बंद कर देता है तो क्या होगा? तो जिस देश का टाइप टूटा है उसको तो नुकसान हो जाएगा जो सप्लाई कर रहा था. अब वो अपने लिए सप्लायर कहाँ से लेके आए, वो उसका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. आपने किसी भी कंपनी के साथ पैक्ट साइन कर लिया है तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. जो टाइम पीरियड है उसमें वो बंधा रहेगा. हाँ, वो बात अलग है कि और अगर आप उसको कैंसिल करेंगे तो इट कैन पुट अ केस ऑन यू. आपकी कंपनी आपके देश के ऊपर केस कर सकता है क्योंकि यू हैव ऑलरेडी साइंड अ पैक्ट. Now children, I have told you today about the concept of globalization and Indian economy. अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. Now let's move towards the questions. अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ. क्वेश्चंस में सीधा आते ही I would like to say, okay, if I talk about the questions, soon the questions would be visible on your screen. My first question is, which of the following are the basic functions of foreign trade? Options are, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग. Which of the following are the basic functions of foreign trade? First option, the competition between the companies gets reduced. Option 2, the buyers get more varied choices of goods.
Next option is the producers can sell their goods in international market. So now what's the answer? Yes, all the people have sent their answers. Kushagra, Parul, Satyendra, Pratyush, all the people have sent their answers. Priya Yadav. All of you read the question. Snigdha Siddhant, read the question, send your answer. Then I will discuss the answer fast. All the children send your answers so that we can do the discussion. Okay, so the correct answer is option C. Now, let me tell you, option C or option 3. 3 is the correct option. Now, why? See, children, foreign trade creates an opportunity for the producers. Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets. They can compete in markets located in other countries of the world. For the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. Now children, let's move to the 11th question. Why do the Chinese manufacturers export toys to India? Option 1. The Chinese toys prove better than Indian toys and are sold at higher prices. Option 2. The toys made in India are not liked by Indian people. Option 3. The Indians do not allow any other country to export toys except China. Fourth option, the Chinese people do not buy toys. Now children, what would be the answer? Priya, read the question again and then answer. Read the question and then answer it. Kushagra Rai, read the question then answer. Siddhant, you also? Okay. Siddhant, Priya, Shlok, read the question then answer. Okay. For question number 11, the correct answer is option A. The correct answer is option A for 11th question. In the competition between Indian and Chinese toys, Chinese toys prove better. और दूसरी चीज, इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एट लोअर कॉस्ट. सीधी सी बात है कि जो चाइना के जो टॉयज होते हैं वो इंडियन टॉयज से अच्छे होते हैं क्योंकि उनके दाम कम होते हैं एज कंपेयर टू द इंडियन टॉयज. जो चाइनीज टॉयज हैं वो सस्ते पड़ते हैं और जो भारत देश के टॉयज हैं वो महंगे पड़ते हैं. तो सीधी चीज़ें आपके सामने दो चीज़ें रखी हैं तो आप सस्ती वाली चीज़ ही खरीदेंगे और टेक्नोलॉजी के तरीके से देखें वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द 12th क्वेश्चन चिल्ड्रन. नाउ द 12th क्वेश्चन यू हैव टू सी which of the following is not the reason for movement of people
from one country to another? Question is, which of the following is not the reason for movement of people from one country to another? First option, search of better income. Option 2, search of better jobs. Option 3, search of better friends. And option 4, search of better education. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन. क्वेश्चन में नॉट यूज किया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू another? Okay, so the right answer is, this is question number 12. The right answer is third option. Third option is the right option, and the answer is, people move from one country to another in search of better income, better job, and better education. People don't move for a better friends. Now the 13th question is visible. You can see the 13th question. 13th question is the competition. The last question for today. The competition among the producers in interconnected countries dash due to globalization. It is a fill in the blank. The competition among the producers in interconnected countries dash due to globalization. Option A, decreases. Option 2, increases. Option 3 is not affected, and option 4 is controlled. Yes, very good. Kushagr Pratyush. The answer is right. The correct answer for this question is answer number 2. The correct option is option 2, that is increases. So children, for today this much only. In the next class I'll be doing the consumer rights. Till then, take care and just go through the chapters.